fallibilities with humility in the spirit of self-accountability and as a testament to our commitment to ensure that justice shall be served with unwavering integrity and fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. The advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution requires this court to render an opinion on any, quote, question of law, unquote, of public importance referred to by the President. To us, the question of law in essence is whether the requirements of due process and fair trial were complied with in the murder trial of Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, hereinafter Mr. Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, by the trial court, which was the Lahore High Court, and the appellate court, which was this court. This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Zia-ul-Haq. The reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference, which included when we were hearing the matter, the caretaker government. This collective interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr. Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Muhammad Ahmad Khan Kasuri. With the able assistance of the eminent legal minds of the country, we, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, render an opinion on the referred questions in the following terms. I'll read the questions. There were a number of 5 questions. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, and Article 14 and 25 of the Constitution. If it does not, its effect and consequences. I should clarify these questions were already framed when we heard the matter. And our opinion is as under. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. At the relevant time, Article 10A wasn't part of the Constitution, but the principles enunciated therein have always been part of our jurisprudence. The second part of the opinion of this question is, the question and the Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. Question number 2 was whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. And our opinion is, reference questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfikar Ali Bhutto case, regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in Zulfikar Ali Bhutto case has already been descended to or overruled. Questions number 3 and 5 we have taken together, and these are respectively: whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. And question 5 was whether, on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. In our opinion is, in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case.
However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. Question number 4 referred to Islamic injunctions, and our opinion, we kept asking repeatedly that we needed assistance but was not rendered. So our opinion is we were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion on the Islamic aspects. So basically our opinion is that the late Mr. Zulfiqar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. Try to have it rendered into Urdu as well and put up this on the website. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना रही थी। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुतफ़िक़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। तारीख के कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। जब तक गलतियाँ तस्लीम ना करें ख़ुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुतफ़िक़ा है। चीफ जस्टिस ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुनाई। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस था जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह राय सुनाई और ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला था 9 रुकनी लार्जर बेंच का। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। तारीख के कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिसकी वजह से सूरत हाल पैदा हुई। जब तक गलतियाँ तस्लीम ना करें ख़ुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की राय मुतफ़िक़ा होगी। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक़ पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना रही थी। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुतफ़िक़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। जब तक गलतियाँ तस्लीम ना की जाएँ ख़ुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राय मुतफ़िक़ा होगी। उन्होंने कहा कि भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक़ पर अमल नहीं किया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुतफ़िक़ा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये शॉर्ट ऑर्डर पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। जब तक गलतियाँ तस्लीम ना करें ख़ुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की राय मुतफ़िक़ा होगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक़ पर अमल नहीं किया गया। जब वो ये शॉर्ट ऑर्डर पढ़कर सुना रहे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वकला के हमरा वहाँ पर मौजूद थे कमरा अदालत में। ये शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में आज पढ़कर सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुतफ़िक़ा है। ये कहना था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। उन्होंने कहा कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। जब तक गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे ख़ुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख के कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई और रेफरेंस में 5 सवालात भी उठाए गए। इस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जुल्फ़िकार रेडी है? थोड़ा पीछे रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला सुना दिया है। अब हम इसकी डिटेल्ड वर्डिक्ट के इंतज़ार में होंगे और इंशाल्लाह ताला जब डिटेल वर्डिक्ट आएगा और हम अपने वकला से बात कर सकेंगे तो मैं तफसील में आपसे बात कर सकूंगा। मगर जो बुनियादी बात है कि अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को
फेयर ट्रायल नहीं मिला और उसका आज फैसला उस जुडिशल रेफरेंस में जिसने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था, उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं और ये एक तारीख़ी जो कदम आज उठाया गया। उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। ये जो फैसला था ये ऐसा एक दाग था इस अदालत में जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम इस इदारा से जो इंसाफ का उम्मीद होना चाहिए था, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। अगर कायदे अवाम जैसा शख्स को इंसाफ नहीं मिला हो तो आज मैं जो ये यूनानिमस कोर्ट ऑर्डर है और मैं तमाम जज साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो वकलाक थे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जो एमिकस क्यूराई जो पाकिस्तान भर में से चीफ जस्टिस साहब ने इस कोर्ट में रिक्वेस्ट किया उनका असिस्टेंस का और जिस तरीके से इन्होंने कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा लड़ा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा।